हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 9th. आई एम अप एंड राउंड दैट इज सर्कल चैप्टर. वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 5.2. सो क्वेश्चन नंबर वन में जो दिया हुआ है पहले से सॉल्व करते हैं. इसमें कहता है शो दैट द ट्राइंगल फॉर्म बाय ए कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेलेस. सो इसमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है आपको, right? This is the circle has been given and this says one chord. Let's say this is AB chord, AB, right? Triangle formed by a chord at the center is isosceles, right? और ये triangle form हो रहा है इससे, let's say OAB. OAB is the triangle which is being formed by the chord AB at the center. It says this is an isosceles triangle. That means ये और ये साइड बराबर हैं. तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव triangle AOB is isosceles triangle. ठीक है. देन कंस्ट्रक्ट. आपको कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी? ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड नेम इट OC. सो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम center O on AB, right? So now proof. Now we have to prove this triangle OAB is isosceles triangle. So take triangle OCA and triangle OCB, right? So the first thing is AC is equal to BC. Why? OC perpendicular bisector bisect AB in two equal parts, that is AC is equal to BC, right? Then the second thing is angle OCA is equal to angle OCA is equal to angle OCB. Both are 90 degree each, right? The third thing is OC, that is this line. OC is equal to OC, that is common. Now triangle OCA is congruent to triangle OCB by side angle side, that is side angle and side, by side angle side rule, right? ये congruent भी है, and when it is congruent, so OA is equal to OB, ये साइड भी बराबर होंगी, बाय CPCT corresponding part of congruent triangle. So triangle OAB is isosceles triangle. Now it is proved.
ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर होंगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सो दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says that show that if two such isosceles triangle occurring in the previous question have equal base, they are congruent to each other. Now, in question number 2, it says that there is a triangle like previous question, right? And we have one triangle. This is OAB. And again we have one more triangle, right? One more triangle, and it says this CD is equal to AB, right? This side is equal to this side, that is the chords are same, so prove that these are congruent triangle. So let's prove. To prove triangle OCD congruent to triangle OAB, right? There is no construction, so proof in triangle OCD and triangle OAB, the first thing is AB is equal to CD. This is given to us, that is the chords are equal, these are chord and equal. Now this angle is equal to this angle, so angle COD is equal to angle AOB. Why? This is vertically opposite angles, ठीक है, vertically opposite angle है, and this side AO is equal to COD. Why so? Radii of same circle ये बराबर है इस साइड के, क्यों? क्योंकि ये आपकी रेडियस है, दिस इज रेडियस बिकॉज दिस इज डायमीटर गोइंग फ्रॉम द सेंटर, सो दिस इज रेडियस एंड रेडियस, सो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. नाउ वी कैन से दैट ट्राइंगल OCD congruent to triangle OAB by side angle side rule. साइड एंगल साइड रूल की सहायता से हम इसे प्रूव करते हैं कि ये जो है ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, क्योंकि ये साइड जो ये बराबर है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये साइड इस साइड के बराबर है, तो साइड एंगल साइड की सहायता से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल. थैंक यू.